JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट की एनुअल डे सेलिब्रेशंस पर लेकर आ रहे हैं। जीबी पंत इंस्टीट्यूट के एनुअल डे सेलिब्रेशंस में उनका लद्दाख में दूसरा साल है। 2019 में उनकी स्थापना हुई थी और आज के एनुअल डे सेलिब्रेशंस में यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर प्रोफेसर SK मेहता जी यहाँ पे आज के स्पीकर हैं और आज वो हिमालयन पॉपुलर लेक्चर लद्दाख सीरीज़ 2 पे वाटर पोल्यूशन और रेमिडिएशन पर आज यहाँ पर जो हैं अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। Thank you very much. Thank you, sir. This is just to apprise you that this can be done, and I would request you to please release it. Yes. And everyone is in the Ministry of Environment and Forest itself to guide and support on the Himalayan and mountain policies to the ministry. Next, please. This is I will give you a brief introduction of Ladakh Regional Center. It was operationalized since December 2019. So this was the very first when we came here and started that time. LG sir said you are new, we are new. Correcting the thing was they had given a very big boost. And this year they are asking to the Chancellor of Tigger in Uttarakhand. Next, please. The mandate of the institute is actually to undertake in-depth research and development studies, artificial glacier thing. But the important learning lesson was that what the specialist told was not actually transformed into the field. So the villagers themselves. I joined on August 19 only, and very new to this place, which are dismantled, and this is very common in the coastal areas, which excrete so many chemicals and other unwanted things, and therefore they cause also pollution. Next, please. Pathogens are another type of pollution that prove very, very harmful, and they can cause many illnesses, as we know, that range from typhoid to dysentery to minor respiratory and skin diseases. And pathogens include organisms such as bacteria, viruses, and protozoans. These pollutants enter waterways through untreated sewerage, storm drains, septic tanks, runoff from the farms, and particularly boats that dump sewerage. So these are very common and very, they create a lot of problems, and pathogens are created. And coronavirus is also an example which has created havoc into the society. Now, the surfaces of water pollution, there are some what we call non-point sources and other we call point sources. For example, in non-point sources, urban areas where we develop people have their houses. Lot of houses nowadays is happening, like a particular area is crowded with a lot of houses, lot of societies, and they are naturally discharge sewerage. All these problems will be there, and they are discharged into the, for example, river. And there are rural homes also, they discharge everything into the rivers, and water get polluted. Similarly, we have point sources where wastewater treatment plants, for example, are created. They are mostly created near the water bodies which are available, and factories, and even animal feeders, but they are non-points. So these are some of the point sources. There are some non-point sources, but all they create the pollution. Experts can suggest which are the plants, and very much true, there has to be regulations, act, and punishment for those who don't follow. Otherwise, we will go on, finding out, what went wrong, what should be done. But unless there is a strong regulatory body, law, act, water act, as you have suggested, sir,
Systems. What I would have few suggestions if Dr. Subrad is noting and might be presenting it to the UT is, one is to regularize and to have some kind of a restriction on more bore wells. Two is having desalination plants so that we can use we have thousands and thousands of gallons of water flowing in this river, in the Zanskar river. We are not using it, it just flows into Pakistan. Yes. Why not use it putting up desalination plants? And for that, what energy we can use is, we have ample of renewable energy over here, and every region has different sources of renewable energy. You want the people to control them. So if that also can be from the government side, some realistic studies or some controlling can be done. I think these are the main reasons for our scarcity, whatever natural resources scarcity. So these three things I found. When we were a child, there used to be heavy flow of water in the Indus River, and these springs, which are all fed by glaciers, has been depleted. So main is the natural, and to add this, we have sudden influx in tourism, and Madam has rightly said that more than 55% of the water resource are used by the tourists. Nanoparticles you mentioned, and that is something again that we should be the very prominent technology that should be deployed in a region like Ladakh, which is already a sensitive region. So we realize that composting is very technical here. We are realizing that composting specifically in winters are not a success. And we have done a few projects with Army as well to see what all. So launching these drives on their own, where all the rafting companies together are cleaning the Indus River, and they took out approximately 6 tons of garbage from closer to Himis monastery all the way down to Palam. So they took out 6 tons of garbage from that, and rightly said, I think we can put the policies in place, we can get everything in order, but till the time the locals are not sensitized, till the time there are no workshops that are conducted with the locals about waste management and not polluting their own rivers, it is not going to be easy. We missed a master plan for Leh city, and we should not be missing this bus at least. We should not be polluting our water bodies, and we should create certain awareness to the tourists and to the people who are managing the tourists here. That should be the prime focus, and as Chancellor sir was also saying, we have to find out the right plans and right strategies. For all of us, in the sense that before we will see the African situation which the slide showed, we have to be very careful before we see that day. When we look at the water, first we see taking the Ladakh into consideration, that's what is scarcity. How much resources should go for plantation and what type of tree species. So we should give the focus, like a topic going on the plantation of poplar trees. So like in plain area in Haryana and Punjab, eucalyptus tree there, it takes a lot of water and it makes the soil unfertile. So we have to think of that. We'll come on board at one platform and we'll discuss on some broad issues pertaining to Ladakh, because I believe that this kind of lectures will only bring what are the core issues, what are the major problems that Ladakh is facing. So I would like to say that from now onwards we will be starting this kind of lecture series, not once a year but twice or thrice a year, to generate awareness about various issues that are pertaining to Ladakh. So I would also like to say that we as a civil society also, there is a huge obligation and mandate among them also, that major issues need to be discussed at various platforms also. This kind of issues are not being discussed at civil society level, where civil society can play a major role. इसीलिए जीबी पंत से भी यही मेरा गुजारिश यही रहेगा कि खासकर आप लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लिंकिंग करते हैं इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में, मेन फोकस पॉइंट यही है।
हर जगह जाके आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं गाँव में, खासकर रूरल एरियाज में। जब मैं जीबी पंत के बारे में मुझे थोड़ा पढ़ने का मौका मिला तो कौंसल हमेशा साथ में है, साथ में हमें थोड़ा सा इनपुट दे के हमें पॉलिसी कैसे बनाए जाए, वाटर कैनल कैसे बनाए जाते हैं, स्कूलों का बिल्डिंग कैसे बनाए जाते हैं, और ऐसे सारे बहुत सारे डिसिप्लिन है। आपका टास्क की मल्टी डायमेंशनल है, तो हर एक चीज़ में आप घुस सकते हैं। और इतना लो कॉस्ट पे आप लोगों ने इतना प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, इतना लो कॉस्ट पे टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो हर कोई भी एफोर्ड कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारा आज के स्पीकर साहब ने यही हमारे सामने ये रखे बोरवेल को लेके। अभी पूरे देश में जेजेएम का एक वो चल रही जल जीवन मिशन, घर घर पानी करके, और लेह में भी नेक्स्ट अगस्त तक एक मिशन मोड पे काम कर रहा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एलएसडीसी कि नेक्स्ट 15 अगस्त से पहले इसको हर एक घर में पानी देने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, पूरे की पूरा करेंगे करके। लेकिन बोरवेल मैक्सिमम जगहों पे बोरवेल का इंकरेजमेंट ज़्यादा इसमें है। लेकिन एलएसडीसी का पहले से यही रहा कि जितना हो सके हम चश्मे का पानी यूज़ करेंगे, ग्लेशियर पानी यूज़ करेंगे। लेकिन इसको जल्दी करने के उस मिशन में बहुत सारी चीज़ हम भूल रहे हैं। आने वाली इन कमिंग ईयर विल बी अ ब्लंडर कि बोरवेल से अब अगर आप इंटरेक्शन होता है कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से या किसी सेक्रेटरी साहब से इसको ज़रूर सामने रखने की कोशिश करें, क्योंकि एलएसडीसी हमेशा नहीं चाहती। जितना हो सके हमने कोशिश किया कि अपने नाले का पानी हो, ग्लेशियर का पानी हो या स्प्रिंग का पानी हो, सोर्स ऑफ वाटर हमेशा यही रहेंगे। अभी मैडम कुंजस ने भी यही हमारे सामने रखा कि बहुत सारे पानी वेस्ट होता है हमारा, खासकर इंडस का हो, जितने भी रिवर्स है, इंडस है, संस्कार है, शायोक है, साथ साथ में बहुत सारे नाला, हर गांव में नाला से, और समर में सारे के सारे जितना भी नाला होते हैं उसका पानी वो भी वेस्ट होता है। उसको कैसे हम कंजर्व किए जा सकते विंटर के लिए या स्प्रिंग के लिए। जैसे कि अभी हमारे सामने आया कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर पहले बनाए, अभी उसके साथ सिग्मोल ने क्या बोलते हैं उसको, आइस तूपा। अभी हम नाले का पानी को कैसे कंजर्व किया जा सकते हैं। हर एक गाँव में नाला ऐसे ही बहते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं कि बोलते हैं ये पानी कहाँ यूज़ होता है, इसका पानी बिल्कुल यूज़ नहीं होता, सीधा जाके इंडस में जाते हैं या रिवर्स में जाते हैं। इसको कैसे यूज़ में किया जा सकता है। और आने वाले दिनों में हम इस बोरवेल का अल्टरनेटिव एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। इस इंडस की वाटर हो या रिवर वाटर हो या स्ट्रीम की पानी को यूज़ करके कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं हम। बोरवेल हमेशा 24/7 या 365 डेज, चलो स्प्रिंग में हमें वाटर का बहुत शॉर्टेज होते हैं, खासकर जब स्नोफॉल कम होते हैं, तो उसमें स्प्रिंग में हम चलो बोरवेल यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टीम वाटर पे जाएंगे, इस इंडस वाटर में जाएंगे। ट्रीटमेंट करने के बहुत सारे प्लांट्स है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है, उसको भी हम आने वाले दिनों के उसमें रख सकते हैं। जीबी पंत एनआईएचई द्वारा उनके एनुअल डे सेलिब्रेशंस पर आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही विस्तार में उन्होंने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताया है। और प्रोफेसर एसके मेहता साहब ने भी वाटर पोल्यूशन और रेमिडिएशन पर जो आज लेक्चर दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि लद्दाख जैसी जगह में जहाँ पर पानी की इतनी कमी है और जहाँ पर पानी की कितनी ज़रूरत है और पानी को बचाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है,
उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से अपने विचार विमर्श प्रकट किए हैं और साथ में ये भी बताया है कि किन किन तरीकों से और किन किन जरियों से जो है पानी को हम लोग खुद ही जो है बहुत गंदा करते हैं। चीफ गेस्ट डेप्यूटी सीसी श्री त्सरिंग आंगचुक और गेस्ट ऑफ ऑनर एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर एग्रीकल्चर श्री स्तंजिन छोस्पेल साहब द्वारा भी बहुत अच्छे से एजुकेशन को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर और हमारी वाटर पोल्यूशन को लेकर आज उन्होंने बहुत अच्छे से अपने विचार प्रकट किए हैं। आखिर में हम चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जीबी पंत NIHE का लद्दाख में जो रीजनल सेंटर है, बहुत बेहतरीन काम ये लोग कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर, खासकर रूरल एरियाज़ में जो हैं जाकर बहुत सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स वो लोग चला रहे हैं। और पिछले भी कुछ हफ्ते पहले हमने आपको उनके रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर की इनॉग्रेशन भी दिखाई थी। उसमें भी उन्होंने मिनी हाइड्रोपोनिक सिस्टम और लो कॉस्ट पॉली हाउसेज भी गांव के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए जो खास डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम जीबी पंत लद्दाख में कर रही है। और अब साथ में आज के कार्यक्रम के बाद ये भी तय किया गया है कि लद्दाख में बोरवेल जो हैं, बोरवेल किस हद तक कम किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है बोरवेल को बहुत अच्छे लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छे स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, पर आने वाले महीनों में और सालों में इससे बहुत ज़्यादा वाटर डिप्लीशन भी हो सकती है। में जीबी पंत NIHE जो है इस पर काम करेगी। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। निसार हुसैन के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।